आज हम बात करने जा रहे हैं 5 पॉइंट्स की. वी विल डिस्कस टुडे अबाउट द 5 पॉइंट्स so that you will present yourself in front of others or in front of an interviewer. So the first point, guys, always develop your personality first. Personality means be confident. One proverb is there in English: confidence is the key to success. Yes, it means so. Because when you are not confident, you get nervous, and when you get nervous, the fear comes in your mind. So the first thing, I will provide you the example. Suppose this is a confident person. So the stage before the confidence, that is nervousness stage, and after confidence, that is overcome the nervousness. So the thing is that before confident, a person is dull, his body language changes, he will not able to speak, means whatever he wants to speak. But after he will get confident, he will speaks like a champ. His or her body language will changes. So these are the positive aspects of confidence. So guys, the first thing, develop your personality, means be confident. And if you will do it in an interview or in presenting yourself in front of others, then you are 50% in anything. Second thing is the most common question asked in any interview, that tell me something about yourself. अब क्या होता है यहाँ पे, tell me something about yourself पूछे, बंदा एकदम अपने आप को शो ऑफ करने के चक्कर में, मेरा नाम ये है, तो मेरे फैमिली में इतने भाई बहन हैं, तो ये है वो है, सारा बताने लगा. नो 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 नो. The interviewer or the second person doesn't want these seats from you. He never wants that. He always wants the true fact. True fact means about yourself. He is or they are basically interested in your thing. Okay? So, the thing is that the interviewer wants to check your confidence, your self-esteem, your communication skill, and your passion about the thing for which you are in the interview. Because they know very well that if you are in front of the interviewer, means you have the capability to come up to that level. So what he wants to check? He wants to check only the communication skill, passion, and all these things. So always try to speak about yourself. You can get the tips from the videos or something else like that, but never rely upon others' tips by speaking yourself. Because you know about yourself better than any others. आपको आपसे अच्छा कोई नहीं जान सकता है, इसलिए अपना तरीका हमेशा अपने बारे में बोलने के लिए ओरिजिनल और अपने तरीके से रखो. Third guys, and the most important one is the question that arises: what are your strength and weaknesses? So very logical question and very dilemmatic question. Strength भी पूछ रहा है अगला आपसे और आपकी negativity भी पूछ रहा है. So it basically depends upon you, how you dealt it, how you say. So you have to take care of with the fact that you have to tell your negativity in such a manner that it will comes like a strength. For example, if someone asks, so what is your strength and negativity? So if I have to say about my negativity, I will say like this: sir, sometimes it's hard to say no for doing anything, but yes, I am trying on this and I will overcome in the near future very soon. Means कि सर मैं किसी को ना तो बहुत जल्दी नहीं कह पाता हूँ, लेकिन अब अपनी इस कमी पे मैं काम कर रहा हूँ और हो सकता है बहुत जल्द मैं इसको ओवरकम कर लूँ. तो यहाँ पे पॉजिटिवनेस जाती है. पर्सन देखना चाहता है, इंटरव्यूअर देखना चाहता है कि आप कितने पॉजिटिव हो, आप चीज़ों को किस तरह से सोचते हो. हर सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं, दो पहलू. सो वो देखना चाहता है कि आप किस पहलू से चीज़ों को देख रहे हो. दैट्स व्हाट he wants to check from this very question, nothing else. They want to check you
They doesn't just want to take the answer from you because you have already passed the written examination, or they know very well about your capability in your resume as well. That's the thing. That's the thing they wants to check, guys. So the fourth point is that always the interviewer or the second person asks in a common question, you can say, why are you here, or why you want this very job? So what will be your answer as an interviewee? What will be your answer? First, tell the positive thing about that very job or the thing which you are going in. उस चीज के बारे में हमेशा पॉजिटिव बोलना जिसके लिए आप गए हो या जिस जॉब के लिए गए हो। दूसरी बात, अपने पैशनेट को शो करना, शो योर पैशन फॉर द जॉब और फॉर द थिंग which you want to do. And the most important thing is that just engage yourself with a societal motive, and also tell interviewer such thing that differentiate you from the other employees as well. आप कुछ ऐसा अलग बोलने की कोशिश करो, चाहे वो गलत हो आपके सेंस में, सही हो, बट कुछ अलग करने की कोशिश करना जिससे उसको लगे नहीं इस बंदे में दम है और इसने दूसरे से कुछ अलग बोला है। हो सकता है आप सोसाइटियल मोटिव को जोड़ के बोलो, या कुछ आप जुनूनियत के साथ करना चाहते हो उस चीज़ के लिए, जिस चीज़ के लिए आप गए हो उसके बारे में बोलो, ताकि आपका एक इम्प्रेशन बैठ जाए इंटरव्यूअर या सामने वाले पर्सन जिसके भी पास आप प्रेजेंट करने गए हो अपने आप को उस चीज़ की। एंड द 5 means last tips from my side, last but not the least, how you end your conversation. That is very important thing, guys. How you end yourself, how your impression goes in the mind of others. So first thing, आपको कुछ इंग्लिश के प्रोवर्ब हैं हमेशा याद होने ही चाहिए, जैसे सर आई डोंट वांट टू कीप यू एनी लॉन्गर, लाइक दिस, सर I don't want to keep you any longer के साथ आप खत्म करके अपनी बात को समअप कर सकते हो जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर देते हुए। ये क्या दिखाएगा? आपकी पोलाइटनेस को दिखाएगा कि इतना देरी होने के बावजूद या हम इससे बार बार पूछे जा रहे हैं फिर भी ये घबराया नहीं, अपने पोलाइटनेस को ये दिखाता ही जा रहा है। दूसरा, आप ऐसे भी बोल सकते हो, थैंक्स अगेन सर फॉर गिविंग यू मी सच अ ग्रेट चांस फॉर कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू। दिस shows your humbleness towards the other person. ये आपकी humbleness को शो करेगा। या एक जो सबसे इन्फ्लुएंशियल वे है, आप ऐसे भी बोल सकते हो, जब लास्ट में, सबसे लास्ट में जब आप उठोगे, थैंक्स सर, थैंक्स अ लॉट फॉर शेयरिंग योर प्रीशियस टाइम विद मी एंड आई विल ऑलवेज रिमेंबर दिस टाइम इन माई होल लाइफ। ये आपकी दिखाएगी या अगले पर्सन के मन में आपका एक डीप इंप्रेशन रहेगा। तो गाइज, these are the 5 tips. These are the 5 tips while you present yourself in front of others or in front of any influential person or in front of an interviewer. You should always keep in mind. And if you do this, 50%, I promise you, 50% you will already be in the things. And 50% depends upon your subjective knowledge. So thank you guys. Have a nice day ahead.